Okay. हाँ. Meeting has been recorded now. Yes. Yes, Arva, please start. Okay. Yeah. First of all, very sorry for the delay, but we know that we will learn a lot with Dr. Liyakat Namole, sir. A very good afternoon to all of you, each one of you. My name is Dr. Arva, and I am practicing in Pune from past 30 years now. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF. And Dr. Arva is my classmate. Yes, yes. And one So of it's my so best nice. people. It is an honor for me to introduce you, sir. So I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji Ke Saath Guruvar 2.0, which we started on 10th of April under the mentorship of our Guruji, Dr. Liyakat Namole, sir. So it really, it's an honor for me, to introduce you. Would like to share a few words about the PHF, which is Promisalon Homeopathic Forum. It was founded by Dr. Liyakat Namole, sir, with the vision to educate homeopaths and to transform GPs to homeopathy again. He is successful in transforming more than 2,000 GPs towards homeopathy. So a big round of applause for Dr. Liyakat Namole, sir. We organize various activities regularly so that we can reach out to the maximum homeopaths who are not able to practice due to lack of proper guidance. Ignited Minds by PHF is a pioneer group for free learning of homeopathy, first started on WhatsApp and now it is on Telegram group. We have more than 3,000 doctors who are learning daily on this Telegram group. So if you are interested, please contact Dr. Pranita. Recently, we have completed free webinar series of 100 lectures on Zoom, which are available on the YouTube channel, that is Ignited Minds by PHF. This session is session number 116. I feel very honored to welcome and introduce today's speaker. I don't think so I have words for you. But in short, just giving a brief introduction about Dr. Liyakat. He is a most eminent and passionate homeopath from Nasik, Maharashtra. He has been in the practice for more than 31 years and he has a lot of experience. He's conducted more than 300 seminars and 250 webinars all over. He has conducted nationalized seminars on specific diseases like diabetes, cancer, infertility, pediatric cases, and you name it, and he has done it. His aim is to convert 10,000 GPs to homeopathy. And till now, he's successful in doing this for 2,000 GPs to homeopathy. If not 100%, definitely a mixed practice of homeopathy and GP. He is the pioneer of the group Ignited Minds by PHF, where more than 3,000 doctors learn on daily basis, which we have told before also. He has discovered a unique method called MML, Mind Method by Dr. Liyakat Namole, sir. The focus of MML is practicing solely on mind. Empathy is the mantra. Dr. Liyakat Namole is the master of gestures. He is the one who has introduced gestures in homeopathy. Through his keen observations and huge experience, he has found out about many original gestures, which is a blessing to the world of homeopathy. He is the author of bestseller book, Humanopathy. Till now, more than 20,000 copies have been sold, and he has discovered this mind method and mentioned in his book. He is now working for the second edition. So, over to you, Dr. Liyakat, as each moment of your guidance and teaching is precious. And thank you once again. Thank you, Arva. Such nice, lovely words. Oh my God. I'm so pressurized when Arva is introducing me. Coming from a class. No, but you deserve it. I think a big applause for you. Alright. Thank you so much. Thank you. Guys, I'm sorry actually because there were more appointments and without appointment also patients came from far. So I couldn't say no to them. So
we are actually running. We are running the series of infertility. This is the third lecture actually about infertility. In last previous two lectures, we studied about female infertility. Now, the main thing, very rarely, very few people, we hear about this very few times because we do not consider male as a problem in infertility. That is why less research and less work and less focus is given on that. Whereas in my practice, I have always said infertility is not a single man's problem. It is always the couple. Okay, it is the couple that has the child. It's the couple that Can you has the speak a child. little louder, please? Yeah, it is the couple actually that has the child. Okay, so when you are dealing with infertility cases, you have to really take care of both of the parents. Okay, both the partners are to be considered. Last time we saw in last two lectures about females. Now this time I am going to talk about male infertility, inshallah. Let me share the screen. This PPT is thanks to Dr. Mansi Patil. Okay, I didn't have much time today to prepare, but of course, because I conduct the course about male infertility, so we have material already ready about that. Okay, but since we want some schematic thing, I am here presenting this. Okay, but let's see the PPT first. The major causes of male infertility are obstruction to the passage of sperms, like we always think, right? To the passage of sperm, then problems with the sperms. This is the most important thing that we deal with. है ना क्योंकि अगर पैसेज में प्रॉब्लम रहा तो most of the times they go to allopath, they get it surgically corrected, and then they have the child. They do not come to us. They come to us for azoospermia, oligospermia, azoospermia, low count or zero count. Then functional problems like impotency. Yes, even for this they come to us many times. And then hormonal problems like like they have less testosterone and more female hormones that we see a lot nowadays. Like this fourth, we see a lot. Okay, this hormonal problems we see a lot, though undiagnosed. Many times it is undiagnosed because we do not do any tests. I mean, I do not. Uh, I don't want the patient to spend unnecessarily more on these things, right? So there are many homeopathists who like to do tests and all. They are all that investigation minded. I am not. I feel that if I'm understanding the case, if I'm understanding the person and the reasons, then I do not indulge into investigations and things like that. Okay, so let us understand each problem. Okay, let us understand each cause uh, one by one. So the obstruction to the passage of the sperm. Okay, what could be the possible thing for it? What could be the possible causes? Now, GNM, let us see what GNM talks about infertility. Okay, GNM says the biological conflict linked to the testicles is a loss conflict concerning the loss of loved ones. Remember, loss of loved ones. Then, in comparison, the loss conflict related to the male germ cells is more of a primeval nature. Okay. The fear of losing a beloved person can already trigger the conflict. The same holds true to the loss of a pet. Okay. It cannot be, it's not, no, it's not always like father, mother, or sister, or brother. It can be loss of a pet also. Constant self blame after a breakup. ये भी बहुत मैं देखा सेल्फ ब्लेम इज मैंने वो एक शेर पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा था तब से सेल्फ ब्लेम मैंने काफी कम किया कि गुनाह करो करते जाओ मगर खुद को कभी गुनहगार न समझ ये द मोमेंट you stop self reproach the destruction to a level stops. Okay, to a great level stops. But then it's not कि बाबा आप गलती ना मानो तो फिर तो आप ईगो में जाओगे फिर that is also a problem. Okay, but let's understand through GNM the same holds true to the loss of constant self blame after a breakup or death of someone close can keep the conflict active.
A loss conflict can also be evoked through an argument, betrayal, unfaithfulness of a partner or friend. इसके लिए तो अपन देखते हैं हमेशा, है ना? Argument है, betrayal है. Ailment from betrayal, again we have Rasji, unfaithfulness, then you have medicines like Lacases, Hyacinus, right? Okay, so let us understand now these things. We'll go back to the first slide. Let us understand obstruction through the passage of sperm. I had one case very recently. I had one case. Okay, I directly asked one thing. Okay, why did you come to homeopathy? He said, "Sir, I don't want to go through surgery." Because we asked this question, right? Why do you choose homeopathy? Right? Because some people will say, I've been referred, I have tried many medicines, and then I'm coming to you. That is the first answer we get, right? I tried many medicines, and then I thought, let us try homeopathy. तो वो ऐसे आपको बहुत मिले. If somebody says, let us try homeopathy, means what will be the rubric? Hello? If somebody says, let us try homeopathy, then what will be the rubric? Sir, gambling passion. Gambling passion, right? बराबर ना? तो gambling passion. If some people say, I have tried all sorts of medicines, and they said, one of my relatives, they recommended your name because they also had similar problems, and they convinced me to come to you. I took time to convince her because I thought homeopathy doesn't work. But when they told me कि हाँ, तो मैं बोला कि हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं होम्योपैथी क्या कर सकती है ना? ऐसा बोलते हैं ना लोग, ये देखते हैं होम्योपैथी क्या कर सकती है. बाकी सब करके देखे, चलो ये भी करके देखते हैं, शायद खुदा ने इनके हाथ में शिफा लिखी हो. ये एक होता है. दूसरा होता है कि देखते हैं होम्योपैथी क्या कर सकती है. ये दोनों अलग अलग है. एक कोशिश करने में क्या बुराई है, ये तीसरा है. कोशिश करने में क्या बुराई है, देखते हैं होम्योपैथी क्या कर सकती है, और कोशिश करके देखते हैं, शायद खुदा ने इनके हाथ में शिफा रखी हो. शायद नहीं, क्या बोलते, शायद भगवान आपके हाथ से हो जाए बच्चा मुझको, ऐसा बोलते हैं लोग, राइट? ये तीनों अलग अलग है. ये तीनों के केसेस मैंने देख चुका हूँ, राइट फ्रॉम अजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, वेरिकोसिल्स, ओके, एंड दिस थिंग obstructions. Even if it is a mechanical obstruction, it's like even if there is cyst, whatever can be the obstruction, it opens. It is just like मेरे लिए, see, obstruction यहाँ पर है, vas deferens में है, या फिर obstruction fallopian tubes में है. For me, it is the same. Okay, do you understand? Hello? Yeah. Now first, एक मैं आपको और एक practical tip आज देके जाऊंगा, ठीक है? पहले rubrics का मैं एक practical tip आपको पहले दे दूंगा कि I see whether there's a family history of alcoholism. ओके, फर्स्ट थिंग, ये जो अपन होम्योपैथ भूल जाते हैं ना, मैक्सिमम होम्योपैथ अपन क्या होता है ना, हिस्ट्री में अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री अपन पूछना भूल जाते हैं. कितने लोग हैं यहाँ पर अभी? हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर? 100, व्हाटएवर, 50-60 डॉक्टर्स आर प्रेजेंट. टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आस्क, do you drink? Yeah, I do drink sometimes. How about your family? How was your father? Yeah, he used to have a lot of. कितने लोग हैं आप बताओ, कितने लोग पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म? बताओ मुझको. हेलो, सेंड मी थम्स अप. हाउ मेनी डू यू आस्क? सेंड मी थम्स अप, सेंड मी थम्स अप्स. हाउ मेनी थम्स अप्स कमिंग? जीरो. हेलो, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक टू मी. एम आई ऑडिबल? यस, बोलिए. यू आर ऑडिबल. पर हाँ, हम पेशेंट का तो पूछ लेते हैं लेकिन फैमिली का नहीं पूछते हैं. कितने लोग हैं जो पूछते हैं? एक ने भी नहीं थम्स अप किया. नहीं नहीं, पूछते हैं. We ask but not for the entire family. That is what I'm asking. Do you ask family history of Family history, alcoholism? yes, for sure. Family history पूछते हैं. Alcoholism, do you ask? Alcoholism कभी कभार पूछते हैं, not always, when we feel it, like, you know. बीमारियों का पूछते हैं आप लोग, मैं वही बोल रहा हूँ. हाँ,
That is what I'm saying. But alcoholism भी बड़ी बीमारी है. Nobody asks except Dr. Liyakat. And many of my friends with whom I have discussed, and my students also, because they've seen those who have attended my infertility lectures, they started asking it. Okay, इतना simple है. You ask family history of alcoholism, and the patient also drinks, and the बाप भी पीता था. ज्यादा मगजमारी नहीं करने. Syphilinum 1 ml, 1 dose daily for 3 consecutive days. Don't give any medicine. Ask the patient to come after 15 days. Again, take the case or whatever you have thought about in the initial case taking. First interview, let us say, not interview, but okay. First time when the patient met to you, then give that remedy. But open the case with Syphilinum 1 ml. Okay, now coming back to the obstruction. What could be the possible other cause? ये तीनों तो मैं बता दिया. What could be the other possible cause? चलो, let us talk. है ना? बातें करेंगे ना? Hello, let's talk, right? Tell me. बोलो. लंच वक्त कुछ भी लिया नहीं. ब्लैक टी पे काम चल रहा है. बोलिए. Yes sir. Doctors. Obstruction के लिए मेजर क्या रीजन है? Hello. See, one request to all of you. Whenever you are going to attend any seminar, anybody's lecture, if you know the topic, at least do some homework about that topic, right? So that you get more benefited by that. पहले ही पढ़ाई करके आओ थोड़ा. किसी भी सेमिनार में जा रहे हो, किसी के भी जा रहे हो, टॉपिक अगर आपको पता है तो उसका पहले थोड़ा पढ़ के जाइए. तो फिर आपको you go with the doubts also and you go with the response also. So you understand also things. Right? Okay. See, one of the major causes as a homeopath that I have seen is, come on now, one. जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है अच्छे से, क्लास वगैरह पढ़ा है, ऑब्स्ट्रक्शन का मेजर रीजन क्या होता है? हेलो, एनीबॉडी? Strictures are there. और कौन सी बीमारी है? विच डिसीज? Tuberculosis. ओके. विच माइजम? Measles. मीजल्स तो उससे ही होता है ना बेटा. उससे तो वो तो मम्स के बाद में वो आर्काइटिस होता है. वो अलग. mom, sorry. वो आर्काइटिस होता है ना, उसका अलग. वो तो पल्सटला देते ना अपन उसमें. Yes, somebody had said tuberculosis. Who was that? Doctor सर मैंने कहा Rohini. Okay, Dr. Rohini. What other beta? Rohini, you are very close, beta. Which other disease is possible? Which other disease is possible? Tell me. Tuberculosis से destruction होता है बेटा, obstruction नहीं होता है. Tuberculosis is pseudo sora ना, sora और syphilis ना बेटा. Which other? STDs, sexually transmitted diseases. ये मेरी बहन है, समझे अभी? Which disease बेटा उसमें भी? Which disease more common? Gonorrhea. Gonorrhea. So which miasm beta? Psychotic. Which remedy? Medorinum. देखो तो कितना सिंपल है. हेलो. सो आस्क द हिस्ट्री अबाउट गनोरिया. अब गनोरिया तुम कैसे पहचानोगे? पास्ट हिस्ट्री कैसी है या फैमिली हिस्ट्री कैसी आएगी आपको? फैमिली हिस्ट्री कैसे लगे? हाउ वाज योर फादर? आस्क द वाइफ, डिड यू एवर हैव येलो डिस्चार्ज, येलो ल्यूकोरिया आफ्टर mating, after marriage?
Okay. Main understood now? If the lady gets yellow discharge is a sign of gonococcal infection. Hello. So any lady coming with yellow leukorrhea, please give her 1 dose of Meperidone 1. Whether it is transmitted from her father, like come in the genes, or whether it is coming from the husband, doesn't matter. We want to heal them. So even if they have yellow discharge, open the case with Meperidone 1 m 1 dose. Or you can give Meperidone 1 m 1 dose OD for 3 days. Okay. Second question you will be asking them, whether do you have genital warts? Did you ever have genital warts? Both of them. If the lady had it, the husband will get it from her. If the man had, I don't know. Let's talk about the man now, right? So if the man had scrotal warts or penile warts, again, give a dose of Meperidone 1 m. Third, though, we know if they had, like if they had been to sex workers ever, again, open the case with Meperidone 1 m. One more thing, one more indication of Meperidone, whether the patient is active more in the day, whether the patient is active more at night. If the patient enjoys nightlife, again go for 1 dose of Meperidone 1 m, or you can give Meperidone 1 m weekly if is too much into indulgence, like a nightlife man, then give Meperidone 1 m weekly at least for a month. Again, one more indication of Meperidone is, come on, hello. I have written Meperidone in detail in my coming book. Don't worry, I'm going to explain Meperidone in depth. But I'm giving you some very important tips of Meperidone in male infertility. What is the other indication of Meperidone? Possibly upsocho. So please remember, mind method is not necessarily practicing on mentals. I mean, the rubrics given in the mind chapter of the repertory. No, you have to really go inside the mind, read behind the lines, go to the spiritual part of the remedy, go to the soul of the remedy. Okay? Hello? And then have the indications. Okay, now tell me which other possibility, if the man had masturbation tendency very early in life, if the man had physical relationship very early in life, like 15, 16, 14, like in the teenage, like in 7th, 8th standard, 9th standard, like that. Okay? And if the man is too much into, again, indulgence of physical pleasure, mainly sexual pleasure, again, Meperidone 1 m 1 dose. Okay? You start, not necessarily if the case is like cancerous or staphylococcus, of course you're going to give, but keep it a second remedy. Start with Meperidone 1 m. You remove the layer, the barrier through which this is what is the difference between a bookish doctor and a practical homeopath. Okay, because we have read Clark's and Withelcott's and Dr. Hahnemann and Dr. Kent and Boger and all sort of books. Dr. Herring's lesser writings of Dr. Hahnemann, lesser writings of Dr. Kent, sir. Do you understand? All these people we have. Not only just reading mind method books and all. No. So these books, thankfully, we are coming from we had very good teachers in a college.
ओके, तो हम लोगों में ये पढ़ने की बहुत अच्छी हमको आदत लगी। दूसरा, हम लोग ब्लेस्ड इसलिए कि हमारे घर में टेलीविजन नहीं था, जो भी था तो छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट वाला था, नसीब से। वी वर नॉट कमिंग फ्रॉम वेरी रिच एफ्लुएंट क्लास, थैंक गॉड। सो वी हैड द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, अ लॉट ऑफ रीडिंग, लॉट ऑफ, आई मीन, जो चीजें समझ में भी नहीं आती थी वो पढ़ते थे। अब वो चीजें क्लिक होती कि अरे हाँ, ये था, ये इसमें ये था, इसमें ये था, देन वो पॉसिबिलिटी हमारे मन में आती, एंड देन वी यूज दिस रेमेडी artistically, because homeopathy is what? Art and science of homeopathy is an art and science. Please remember. Okay, so metronym ke one more point now. Come on, one more point. Come on, coffee from my side. Can I ask one question? One, just let me finish. Yeah. Let me tell about metronym. One more point about metronym. Come on. If the case is coming of obstructions, especially, tell me. Hello. Hello. What about people who masturbate? Later, I'm just asking you one point about metronym. Hello, tell me. Anybody? Yes, tell me. Hello. Anybody? This is a mind thing. Okay, now let us say. ये mind वाला है, ये mind वाला rubric है, चलो। हेलो। दो जगह पे मैं मेरोनम यूज करने वाला हूँ। एक ये पॉइंट है, चलो, अरे सिंपल है, लेट अस गो टू द रेपर्टरी, अपना जो फेवरेट है सबका, चलो। One rubric of metronym, my favorite rubric of metronym is talking business. अगर पेशेंट तुमसे मोल भाव, लेन देन, फायदे नुकसान की बात कर रहा है और उसको अगरचे कुछ भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो ऑब्स्ट्रक्शन की अपन बात कर रहे हैं, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या उसको क्या बीमारी है, व्हाट इज दैट, वेरिकोसिली है, ज्यादा मत सोचो, मेट्रोनम बने वन डोज दो, ठीक है, एकदम सिंपल। उसको वॉट्स है या कुछ भी है, एनीथिंग, एनी सेक्सुअल डिसऑर्डर, ओके, और एनी infertility disorder in man and dog. Metronym. In any patient, if the patient is obese and doing talking business, ज्यादा मत दे, don't second thought बाद में देना, जरूर दूसरी रेमेडी देना अगर लगती है तो, शायद ना लगे। 95%, 90% प्लस केसेस के अंदर आपको मेट्रोनम के अलावा दूसरी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन इन केसेस ऑफ ओबेसिटी। ओके, ओबेसिटी, स्वेटी, dirty skin, warts, eating disorders like hogging, sexual activation, too much into indulgence, ज्यादा मत सोचो। इसके साथ अगर गवर्नमेंट है, ठीक है, टॉकिंग बिजनेस के बजाय गवर्नमेंट ज्यादा है, देन यू थिंक अबाउट मर्क सॉल्व। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा खा ये वो उसमें, देन यू थिंक अबाउट मर्क सॉल्व। लेकिन ओबीज है, टॉकिंग बिजनेस है, या फिर कुछ भी वास डिफरेंस में प्रॉब्लम है या कहीं में भी है, then you give metronom one days if the patient talks about this thing, talking business, कितने दिन लगेंगे, क्या होगा, फायदा नुकसान, okay, give metronom one day. Yeah, yes Arva, what were you saying? I had a question, like if a person in early age, if the person masturbates, so can it lead, like, No, masturbation is not the reason for not it. related to the, like, that infertility or anything? Is it? I had a question in my mind, that is why I asked. What is the question? This is what, like, continuously some people masturbate, like, so later on when they get You have married, to go to the, no, it doesn't cause much damage as such. nothing.
It But does it not does cause have, damage. because elements from masturbation rubric है, Hmm. so obviously they do get because it is more self-indulgence, na? I mean, taking pleasure in abnormal thing, right? Yeah, right. See, now masturbation is when, कब करते हैं masturbate? If there is no partner available. No partner. But then in Then early second, if there is ages. a fear. Some Hmm. people masturbate out of fear of STD. Some Hmm. people masturbate because they like to masturbate. Like Bufo, because he's an idiot. Idiot है ना, उसमें seek solitude for masturbation. उसमें Bufo है, मतलब इतना पागल होता है कि उसको अकेलापन क्यों चाहिए? कि Correct. masturbation. For अकेलापन तो you want to have, you want to mate with your partner, right? But this stupid, that is what ना, मतलब Bufo इतना पागल होता है कि वो यार अकेला उसको इसलिए चाहिए कि उसको masturbation करना. So it's a stupidity. Correct. So Okay. these are the three main things. Fourth is like, people ogle. They वो देखते हैं ना, they acid floor देखते रहते हैं औरतों के पास में. तो फिर उसको excite हो जाता है and then they want to get light. They want to get light कि, let us shed off the load. So then that is the satyriasis होता है. एक rubric satyriasis है. एक masturbation take. Satyriasis मतलब they cannot resist the sexual desire. उसमें भी मेडोनियम है. मतलब मैंने कोविड में मेडोनियम इतना यूज किया है कि इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम पीपल हु आर वेरी मच बॉदर्ड अबाउट सेक्सुअल, those who are very sexually active, those who are very much sexually focused, oriented, then medullum I have bought in so many cases out with medullum, क्योंकि उसके अंदर डिल्यूजन डूम्ड और सटारियासिस ये दो रूब्रिक है. तो उस पर से मैं मेडुलम बहुत पेशेंट में, लॉट ऑफ पेशेंट्स आई गेव मेडुलम ड्यूरिंग कोविड टाइम. Anyways, now about obstruction, you all understood now. Okay, ये इस ऑब्स्ट्रक्शन में ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं मिलता है, काफी बाकी मिल सकता है चीजें, लेकिन मेडोनियम और सिफिलिनम मैंने ज्यादा पेशेंट में यूज किया हूँ. ठीक है. थर्ड इज, सेकंड क्या था कि लेट अस टॉक अबाउट द स्पर्म पार्ट नाउ. So the quality of the sperm, again, if there are more abnormal types, there is no head, there is no tail, so I check the abnormal sperms. So in the sperm count, if the abnormal sperms are more, then again syphilinum is the first choice. You give syphilinum again you take family history or whatever the reason, if you find dreaded diseases in the family, like बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, स्पेशली सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइड की केस है फैमिली के अंदर, रिटार्डेशन की केस है फैमिली के अंदर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर की केस है फैमिली के अंदर, कैंसर की, मल्टी ऑर्गन कैंसर की केस है फैमिली के अंदर, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली अगर फैमिली है, करप्ट पॉलिटिशियंस वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जो करप्ट है, बहुत पैसे वाले लोग हैं. क्या करता था बाप सिविल इंजीनियर था, गवर्नमेंट में था, इतना पैसा है, मतलब करप्शन का है, पैसा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल बात है ना. तो देन आई प्रेफर गिविंग सिफिलिनम 1 ml, 1 dose daily for 3 days, forget it. Then no medicine. Afterwards, maybe we can think about, but after 15 days or after a month, then we take the man into consideration, like whatever. But अगरचे ये है abnormal types है sperms के, तो please correct that. Please correct that. तो क्या होता है ना, तुम मेल को भी ट्रीट कर देते हो, आने वाला बच्चा भी तुम काफी हद तक माशाल्लाह से सेव कर लेते हो. उसके अंदर ये सारी टेंडेंसीज, सिफिलिटिक टेंडेंसीज उसके बाप से आने नहीं देते हो, ताकि फिर नहीं तो फिर मेहमान में आते ना बहुत लोग कि अरे मैं सिविल इंजीनियर, मैं ये मैं बोलता हाँ बेटा आ जा, मतलब करप्शन करता, मतलब मॉरल तेरे में है नहीं बेटा, आ जा. तो देन वी फर्स्ट वीक ऑफ चॉइस इन मी इज मॉरल फीलिंग वांट ऑफ और करप्ट विनल, है ना. ये दो लेते हैं. करप्ट विनल एक रूब्रिक बहुत मार्क्ड. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर आपके पास आ रहे हैं, हेलो प्लीज रिमेम्बर, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तुम्हारे पास में आ रहे हैं,
भरपूर करप्शन करके बैठे हैं। अगर नेता लोग आ रहे हैं तो भरपूर पैसा है, मतलब वही सब करप्ट प्रैक्टिसेस पे। तो फर्स्ट रूब्रिक ऑफ चॉइस फॉर मी इज मॉरल फीलिंग वाटर और करप्ट विनल, ये रूब्रिक, और ग्रीड, ये तीन रूब्रिक मेरे को ज्यादा आते हैं मेरे में। ठीक है, ये तीनों में से आप एक रूब्रिक तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, जो अब एबनॉर्मल टाइप्स हो गया अपना, है ना। एबनॉर्मल टाइप्स है तो प्लीज थिंक अबाउट मेजरली सिफिलिटिक रेमेडीज। अब उसके अंदर सिफिलिटिक रेमेडीज ढूंढना बहुत मुश्किल है, इवन एक्रोनेट हैज सिफिलिटिक पार्ट, तो वो ज्यादा मत सोचो। लेकिन गिवन अ चांस, आपका पेशेंट गवर्नमेंट है, आपको बता दो कैसे जाना है, कैसे, एकदम सिंपल, मतलब हाउ डू आई थिंक द पेशेंट इज गवर्नमेंट, लेट अस से, तो इसके अंदर ज्यादा सिफिलिटिक क्या आएगा, गवर्नमेंट और फ्रिवलेस है, खान पान का ध्यान नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, तो पहली रेमेडी ऑफ चॉइस फॉर मी विल बी नॉक्सम, arsenic. I will choose these two remedies and lachesis probably. Then I choose then alim sativa, rubinia, veratrum or whatever, or China. Are you getting me? So then for me Merxol, lachesis, arsenic. These remedies, in fact, ये तीनों भी आपको करप्ट पिनल में भी है। देखो आर्सेनिक भी है, मर्क्सोल, हाँ लाइकेसिस मर्क्सोल, करप्ट नहीं, डिसीटफुल में है लोग। एनीवे, तो अगर फ्रिवलस है, खारे पीरे मस्त रहे, तो ये मेरे पास में ज्यादा आता है इसके अंदर। उसके अंदर मेजरली मक्सर आएगा। ऑफ कोर्स आर्सेनिक तो तुमको पता है ओसीडी के रहते हैं काफी हद तक, वो क्लीननेस पेनिया वेनिया में जा रहे तो आर्सेनिक में जाएगा। लेकिन खा पी मस्त एकदम रह रहा है, एकदम उससे कुछ लेना देना है नहीं, तो देन द रेमेडी ऑफ चॉइस फॉर मी इन सच केसेस बिकम्स वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली मक्सॉल, वेरी सिंपल। और आपको मर्क की टेंडेंसी मिलेगी पेशेंट के अंदर, आपको पेशेंट में मर्क बहुत मिलेगा फिर। ठीक है, उसके लिए मतलब फिर वो सब चीजें तुमको, ये ब्यूटी है माइंड मेथड में प्रैक्टिस करने का, हमारे तरीके से, जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसका ब्यूटी है कि तुम पेशेंट को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं करते हो, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछते हो। सी, आप सवाल कब पूछते हो, जब आपको समझ में नहीं आया है, सही है ना। when you don't understand you ask questions, if you have understood you will not ask questions, these many questions at least you will not ask, right? So by asking more questions, you actually make the patient uncomfortable many times. So avoid asking too many questions. Listen to the patient. Very patient. So to understand the patient, the physician has to be patient. Hello. Now, abnormal types का हो गया कवर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, impotency या फिर स्लो स्पर्म्स। स्लो स्पर्म्स के अंदर क्या रूब्रिक आएगा, सबसे पहला रूब्रिक क्या आएगा, हेलो, if the sperms are slow, what will be the first rubric of choice, hello, what will be the rubric of choice if the sperms are slow motility, hello, Sluggish, something sluggish. और माइंड में sluggish rubric नहीं लिखते थे, so the rubric is dullness, heat during, right, because in during intercourse it is hot, you become hot, right, you become excited, hello, are you getting me, इतना सिंपल। So sluggish, slow motility of the sperms, the rubric of choice, not necessarily in all the cases, but majority of the cases will be dullness, heat during. Are you with me, guys? Hello, are you understanding what I'm trying to tell? Yes, yes, Is it Yes. going bouncers? Hope not. yes. Is it going bouncers? No. Thank you. So now let us, sluggishness फिर आपको और कहाँ भी मिलेगा, पेशेंट के बाकी की चीजों में भी देखो आप, कितना एम्बिशियस है पेशेंट,
कितना आराम से जिंदगी कर रहा है, इसमें कितना गो है. You have to see the go in the man. इसमें कुछ फायर है क्या नहीं है. अभी अभी मेरे पास में केस थी, very recently I treated. Okay, very recently, and the girl is pregnant now. In fact, second case also I'm treating now. अभी जो सक्सेसफुल हो गई उसका तो अभी डिलीवरी है, जस्ट gonna be next month. ठीक है. तो मैन वाज लाइक कंटेंट, आ रहा है खा रहा है फिर. उसकी बीवी ने बोली थी सर ये 8-8 दिन घर में पड़े रहता है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करता और जॉब भी स्विच करता, कुछ इतना टेंशन नहीं रहता, पड़े रहता है, दिन दिन भर पड़ रहता है, खा पिया मस्त रहता, बहुत ज्यादा ये एम्बिशियस नहीं सर. और मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझको व्हाट वाज द प्रॉब्लम, द लेडी सेड माय प्रॉब्लम इज द मैन हैज टू बी लाइक मैन, ही शुड बी वेरी एक्टिव. ओके, दिस मैन इज सो sluggish. It is a put off for me. The lady said it is a put off for me because the lady is very ambitious, the girl is nakshamika, and the man is. When I spoke to the man, I said I'll have to treat the man because he has sperm problems. So then I took the case of the man and मैं उसको पूछा क्या चल रहा है. मस्त सर, ये फालतू में टेंशन लेती, होगा बच्चा जब होगा सर, क्या टेंशन लेने का. होते ना ऐसे लोग. हेलो, क्या टेंशन लेने का सर, जब होगा ना, क्या है इसमें इतना. ऐसे बोलते हैं आपके पास लोग आते हैं क्या. हेलो, आते हैं. होगा ना सर, क्या ये फालतू में टेंशन. मैं इसको बोलता हूँ क्या टेंशन लेने का यार, छोड़ो ना, मस्त रहेंगे ना, क्या है इसमें जिंदगी में. बोलते हैं ऐसे लोग. तो क्या रेमेडी पॉसिबल उसमें, सोचो, गिव मी मोमेंट. फीस ला yes, hello, tell me what is the possible remedy guys. Belladonna. Okay, yeah. और क्या ऐश्वर्या, this is ऐश्वर्या right. Yeah. Yes, sir. हाँ. और where do you practice ऐश्वर्या. Okay. Tell me. सर ऐश्वर्या? मतलब रिसेंटली मेरी इंटर्नशिप हुई है कंप्लीट. We Great. just yes. Which college? From Sambhaji Nagar. कौन सा कॉलेज. Yes. Saili Medical College. अच्छा, उनका कुलकर्णी सर. Yes. You are. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, वो तो मेरी फेवरेट है. हाँ. और what else is possible ऐश्वर्या. Very good बेटा. What else. ओपीएम. सिंपल, कंटेंट, मस्त रहने का. नहीं क्या ओपीएम कैसे याद रखना, कैसे पढ़ रहे थे वो. मस्त जिंदगी में, अरे जो होगा भगवान करे, क्या उसी की मर्जी से सब चलना, जब होगा तब होगा, बराबर ना. हेलो, द रूब्रिक इज स्टोइकल, स्थितप्रज्ञ. जब जब जो होना है तब तब तो होना है. अब आराम से जिंदगी काटने का, भगवान जो करने का करने वाला है. सब अच्छा है जीवन में, क्या बुरा है जीवन में, होता है ना ऐसा. दैट इज ओपीएम. तो ऐसा नो टेंशन वाले हस्बैंड लोग जो रहते हैं वो सबसे पहले देखते हैं उसमें. आई गिव दिस मैन ओपीएम 6 potency for 3 days. Okay, and after that they conceived in a month. Now you said why 6 potency. So I either use 6 potency in such cases. I was scared of aggravation. Okay, otherwise I would have gone for 1M directly, but then I was scared of aggravation. So whenever there are strong mentals present, please go for 6C potency once a day for 3 days. Okay, why not single dose? Because single dose sometimes is not stimulus enough. So I go for 6C once a day for 3 days. Okay, and if you can give water dose also, fantastic. Dry dose, fine. Water dose, fantastic.
Both are okay for me. Now, don't ask me why not LM, because इतने भी ज़्यादा stimulation की जरूरत नहीं है उसमें. So 6 potency, 3 doses, and all the things, mashallah sir. Next month they came in UPT positive. They sent me on WhatsApp, sir, UPT positive. Okay, so to be delivered now. Okay, now. एक बार is रूब्रिक दोबारा से बोल दो, क्या लिया? cycle. अरे नहीं, हाँ। ओपीएम नहीं, बिल्कुल ओपीएम. अच्छा, क्या करना है? कौन सी एग्जाम देनी है? क्यों? समझ जाओ ना, मस्त है. ये जो मैं बताया इस तरीके का, अगर तुमको फील आया किसी पेशेंट में, ओपीएम दे दो. अच्छा लगा मेरे को दुआ दो, नहीं अच्छा लगा पेशेंट को तो कॉल करो. सिंपल है. ठीक है. अब let us understand. Azoospermia is a big topic. I'll cover it sometimes. Like azoospermia, no sperms at all. उसको अपन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको फिर एक लेक्चर के अंदर लेंगे इंशाल्लाह. ओलिगोस्पर्मिया अगेन लैक बहुत ज्यादा नहीं उसमें, वहां पर भी अपन मेंटल पिक्चर लेते हैं. इम्पोर्टेंसी, यस, इम्पोर्टेंसी को साइकोलॉजी में बोलते हैं मदर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट रूम. मदर इन द नेक्स्ट रूम, ऐसा है उसके लिए उसको बोलते हैं. Impotency is called mother in the male impotency, like mother in the next room. मतलब they feel that somebody is there in the next room. They will hear. Okay, वो एक चीज होती है. Impotency, 2 major reasons. Cold wife, one of the major reasons. Okay, because male, both of them fantasize. Male, female, both have their own fantasies. Males have more physical fantasies. Females have more वर्ल्डली फैंटेसीज कि भाई हम ना रोमांटिक बातें करेंगे, फोर प्ले होगा, आफ्टर प्ले होगा. समझ रहे हो? मेल मेजरली आर इंटरेस्टेड इन इंटरकोर्स. वेरी रेयरली ऑफ कोर्स फोर प्ले जरूरत हो तो करते हैं. आफ्टर प्ले मेल्स आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट आफ्टर प्ले. वेरी फ्यू टाइम्स out of 100 encounters in a female, if the man has makes love 100 times, then he will do after play maybe 10 times max. Initial days, yeah, maybe to please the wife, yeah, but they are not much interested in after play. And foreplay, yeah, foreplay because they want to excite the wife for that. This is how the male pattern is, what I have observed, what I have read, what I have studied, okay, what I have seen in the practical life in the clinic, talking to the men, talking with friends, talking in the lectures, talking with guys. I used to go out, I used to take lectures on sexual education for the men, for the students in the 11th, 12th standard को जाता था. तो उसमें भी मुझे कुछ चीजें मतलब काफी जगहों पर I have understood, being living in the male world, of course, 51 years, 52 years of life now. तो दिस इज द मेल पैटर्न. ठीक है. अब इसके अंदर इम्पोर्टेंसी का फर्स्ट, दे वांट द फीमेल टू excite more times. First initial days they get excited, later they want the female to excite. Okay, sometimes it is the female not giving response that causes impotency. So in all these 3-4 times, 3-4, one is there. Like I told, like metronomes are very sexually active, like before, from before. One more remedy that competes with metronome in early masturbation, early sexual experience is high SMS. Please remember. Second remedy that comes with close to metronome is high SMS. High SMS also have tendency to masturbation since childhood. Since childhood. Okay. Observe the man sitting. If his hands are kept on the where the chain is there, like where the male sexual organ is there, if the man's hand is there most of the time, majorly, then think about metronome again. There is one more rubric, touching genitals. Uske andar that rubric you take. If the man is sitting, like hands on the genital, so check touching genitals. Impotency में
one more observation I have seen. If the man says कि डॉक्टर साहब बूढ़े इंसान कैसा लग रहा है मुझको, एक बूढ़ा आदमी के जैसा लग रहा है इतने जल्दी, ये सुनते हैं आप ये सेंटेंस बहुत लोग बोलते हैं, इतने जल्दी बुढ़ा हो गया सर, बूढ़े इंसान कैसा लग रहा है मुझको, स्पेशली मेल कमिंग विद इम्पोर्टेंस। आपने सुना ये सेंटेंस? बुढ़े आदमी कैसा लग रहा है सर, इतने जल्दी बूढ़ा हो गया सर, मैं इतने जल्दी बूढ़े इंसान कैसा लग रहा है। अगेन रेमेडी इज मैटर। You go see old fields in male. Mind में old fields in male matter. Okay. Second, अभी अपन ने जो तीन, let us coming back to the three versions. क्या क्या वर्जन में बोला था कि देखते हैं होम्योपैथी क्या कर सकती है, याद है? मैं भूला नहीं, भूला लेक्चर में क्या था। हाँ जी। देखते हैं होम्योपैथी क्या कर सकती है, बोलिए फिर क्या पॉसिबल रूब्रिक है? तीन, देखते हैं होम्योपैथी क्या कर सकती है, होम्योपैथी लेने में क्या हर्ज है ना? क्योंकि बहुत से, शायद आपके हाथ में खुदा ने लिखा है, और बहुत से रिश्तेदारों को मुझे फर्क पड़ा इसलिए आपके पास है, तो बहुत से रिश्तेदारों को फर्क पड़ा इसलिए आया हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, राइट? देखते हैं, देखने में क्या हर्ज है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। इसके आगे क्या बोलेगा पेशेंट? इसके आगे क्या बोल सकता है पेशेंट? कोशिश करने में क्या हर्ज है के आगे क्या बोलेगा पेशेंट? मैं तो कोशिश कर ही रहा। The rubric is perseverance. और देखते हो किसी क्या कर सकती है। ये क्या है? इसमें क्या फील आता है? Gambling patient for gambling. Freaking eight for. ओके, और Gambling Sir, patient for gambling. inciting. इंसाइटिंग, देखते हो मतलब वो अपने को क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है ना, इंसाइट कर रहा है ना। हेलो, वन मोर थिंग लेट मी टेल अबाउट मेरा is sexual behavior. I told you, want to have sex with every woman he sees. ऐसा एक रूब्रिक है उसमें, वो भी एक रूब्रिक बहुत मिलेगा आपको मेल के अंदर. You will get this rubric very many times. Out of 100, at least 2 or 3 will have this rubric. One will at least have this rubric. मेरे पास तो बहुत है, मैडम, बहुत लगता है, मेल फीमेल्स बोथ, बट फीमेल्स में, हमें मेल में बहुत ज्यादा लगता है स्पेशली. ठीक है, so these are the major, this is the major part. ज्यादा मैं नहीं बोल सकता. Again, this platform has limitations. You can join the infertility course, talk to Dr. Pranita, okay? Or I'll speak on what was the topic left? Azoospermia and oligospermia some other time. Okay, बड़ा टॉपिक है. अगेन उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होते हैं. आई प्रेफर शोइंग द वीडियो केस एंड देन एक्सप्लेनिंग, so it becomes more easier. Okay, anyways, thank you very much. This is from my side. Any questions? I can take a few questions. Okay, yeah, Arwa. Yeah. So thank you so much, Dr. Liyakat Namole, sir. We had a great insight regarding the infertility, and we are awaiting more such lectures from you. Today's lecture was really insightful. We came to know the different factors about infertility, male infertility, and surely we would want more lectures of these type. Hoping to see you again and hoping for the first Thursday of the next month with you. I'm sorry to interrupt you. One more major reason for male infertility is financial Crisis? Financial problems. Okay. Financial problems. Okay, that I forgot. That is there in the more in the oligospermia. It comes more in oligospermia. Okay, that's why maybe I not more. It comes in oligospermia.
Okay. Yeah. Yeah, please. And thank you once again, and surely hoping to have another insightful lecture from you again next month.